हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 10। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी? हीट कैपेसिटी क्या होती है कि एक बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए होगी इन ऑर्डर टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना? तो वेरी सिंपल स्टेटमेंट होगी। तो ए, द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी दैट द बॉडी कैन absorb विदाउट मेल्टिंग, नो। B, the amount of thermal energy required to raise the temperature of body by 1 degree Celsius, which is right. This is the right answer. This is specific heat capacity, right? So let's move on. Question 7. What statement about the thermal expansion of solid, liquid, and gas are correct? Solid tend to not grow by a lot. Solid जो होते हैं इतना expand नहीं होते. Compared to liquids, solids थोड़ा कम expand होते हैं, but liquids compared to gas, gas बहुत ज़्यादा expand होती है. For example, if we had like three samples of equal mass, right? Three samples of equal mass of something, we can just एक second, right? This is solid, liquid, gas, and equally same amount of temperature is risen, तो solid बहुत minuscule होगा expand. लिक्विड भी बहुत मिनिस्क्यूल होगा बट इन कंपैरिजन टू सॉलिड लिक्विड थोड़ा ज्यादा होगा बट गैस विल ग्रो अ लॉट. ठीक है ना? सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस. तो स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं. A, liquids do not expand. That is incorrect. B, liquids expand more than gases. No, liquids do not expand more than gases. Gases expand way more than liquids. Liquids expand more than solids. This is the right answer, but less than gases. Yeah, this is the right answer. So, actually, liquids expand the same amount as solids, but less than gases. No, liquids expand a bit more than solids. Question 8. Less thermal energy is needed to raise temperature of 1 kg of copper by 1 kilograms. This is referring to specific heat capacity. Then is needed to raise 1 kilogram of water by. Acha. Which statement is correct? Copper has a higher melting point. That is not correct. That does not matter. That is correct, but doesn't matter. अच्छा जी. B. Copper has a lower specific heat capacity. A. This is the correct answer. That's why कॉपर को कम एनर्जी चाहिए होगी in order to gain 1 degree Celsius than water. ठीक है ना? सी. कॉपर हैज a smaller specific heat. नहीं, बस ठीक है, इसको छोड़ दे मत. These are totally irrelevant. Very easy answer. Question 9. The graph is the temperature time graph for a sample of wax that is heated so that it melts. अच्छा, इधर तक टेम्परेचर राइज किया गया है और उसके बाद इन दिस पीरियड द वैक्स इज मेल्टिंग. ठीक है ना? द वैक्स इज मेल्टिंग और आगे जो भी होता है दैट डजंट मैटर. इन दिस पीरियड गैस द वैक्स इज मेल्टिंग. तो आगे देखते हैं. द मास ऑफ वैक्स इज 200 grams. द थर्मल एनर्जी सप्लाई टू द वैक्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 12,000 joules per minute. अच्छा, हमें बता दिया गया है कि जो थर्मल एनर्जी सप्लाई टू द वैक्स इज 12,000 joules per minute and the wax is melting for, यहाँ से देखेंगे this is 3 minutes and this is 7 minute mark. So that means the wax has been melting for 4 minutes, right? So the total energy comes out to be 12,000 into 4 because 12,000 joules per minute is provided and it is melting for 4 minutes. So that means the during that 4 minutes 48,000 joules of energy is produced, thermal energy. So हमारे पास energy आ गई. We already have mass. The mass of wax is 200 grams per 200 grams, right? So 48,000
48,000 will be our energy. Mass will be 200 grams. And since say usually इसको ना kilograms में करना होता है, but since ये look इसको kilograms में करना होता है, but लेकिन इसने हमें answers जो दिए हुए हैं that is in grams, so we have to use gram, which is gonna make it easier for us. और आखिर में आएगा latent heat of fusion, which we have to find out. Latent heat of fusion. अच्छा, यहाँ 200 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा ना? सो अगर यहाँ 200 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 200 अगर से डिवाइड कर दें हम, we'll get 240 joules per gram. मतलब हर ग्राम के लिए there will be 240 joules needed. राइट? समझ आई आपको? सो दिस इज द राइट आंसर। अच्छा 10, इसको देख कर डर मत जाइएगा, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स नॉट ट्राई टू ओवर कॉम्प्लिकेट इट हियर। सोलर पैनल्स आर यूज्ड टू हीट वाटर विद अ मास ऑफ 500 किलोग्राम। अच्छा, इसके ना एक साइड पे वो बना लेते हैं, मास इज इक्वल टू 500 kilograms. अच्छा, the total area of the solar panels is 10 meter square and the average power output from each square meter of the panel is 300 watts. अच्छा, for वो बोल रहा है हमें कि एक सेकेंड, each meter square produces 300 watts of power, but there are 10 meter square, right? There are 10 meter square. मतलब ऐसे 10 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ऑफ सोलर पैनल्स है विच विल प्रोवाइड एनर्जी। एक सेकेंड बस, यू मे स्किप। अच्छा, these are 10 squares, each square represents 1 meter square and it is receiving 300 watts of पावर पर सोलर पैनल। सो जो लाइट आ रही है उससे इट इज गेटिंग 300 वॉट्स ऑफ पावर per solar panels. That means के the combined power from the solar panels will be 300 into the number of solar panels, 300 watts power into the number of solar panels, which will give us 300 watts of power every, yeah, total. The specific heat capacity of water is 4800 4200 kilograms. अच्छा ठीक है। What is the increase in temperature after 8 hours? अच्छा, इन्होंने पूछा increase in temperature। एक सेकेंड, ये मैं हटा रहा हूँ। Let me just remove these. Sorry, sorry for that. अच्छा, अच्छा इसके लिए हमें एनर्जी निकालनी है, तो व्हाट डू वी नीड कि हम उसको निकालें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है ना, राइट? वी हैव टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक, नो नो, वी हैव टू फाइंड आउट द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मूला लगाना है विच इज Q, Q which is the energy. Energy will be power is equals to energy divided by time, right? Power is 3000, as we calculated 3000 watts, in is equals to energy divided by time is 8 hours. So we have to find out what it is in seconds. 8 hours, 8 into 60 into 60, which will give us 28,800. 28,800. So 3,000 into 28,800 will give us the energy, which is 84 million. 84 million joules is the energy. Achha, we have found the energy, right? We now we have to see. Look, अब हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। 84 million. Let's just copy it here. See, 84 million is equals to mass, which is 500 kilograms into
क्या करेंगे हम? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 into delta. This is going to give us the delta theta, which is temperature change in temperature. Change in temp. मैं बहुत आराम से क्वेश्चन करवा रहा हूँ so you don't get confused. So let's just get the answer. 86,004, 1, 2, 3, 84 million है ना? Yes, 86 million, sorry. 86 million 400,000 divided by 4,200 divided by 500, which will give us 41 Celsius in change. So D is the right answer, hopefully. 10, D is the right answer. So let's sum it up again. So 10 solar panels hai, each of meter square, which is producing a combined power of 3000 watts, and we can turn that power into energy because they have given us the time. और उस power of जो total energy है ना, उससे हमने देखना है कि कितना change in temperature आया है. So that's it for this video. I hope you enjoyed. Thank you for watching.